Good evening, students. Today we will continue this worksheet 2 Angles chapter, brain teasers problem. Yesterday we have seen question number up till 11. So question number 12 is there. I am reading. Look carefully at the figure and write down. This figure is given in your textbook, page number 169. So look carefully at the figure and write down one pair of complementary angle. Means from this one, this is the figure. From this figure we have to identify one pair of complementary angle. So complementary angle means sum should be 90 degree. So sum should be 90 degree. So which two angle sum is 90 degree looking? This is alone, अकेले 90 डिग्री है. इधर दिख रहा है दिस प्लस दिस 90 डिग्री. तो यही दोनों एंगल का क्या होगा? दिस विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल because their sum will be 90 degree. Total this is 90 degree. So what is the name of this angle? Angle COB. I have written here OAB. This is wrong. This will be BOC is correct. AOB. 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 So angle AOB and angle BOC. These two angles will be, their sum will be complementary angle. Next is supplementary angle. So here from here we have to search two pairs and supplementary angle. Supplementary angle means sum should be 180 degree. So you observe here, now I am rubbing this, you see this angle, and for some time I am raising this marking here. So these two angle you can see total 180 degree straight angle. So what is the name of this? DOC, and this side COA. DOC and COA total 180 degree. So one pair is this and another pair. Now you see this was like this. Now I am rubbing this one. So you can see angle of this and this is also 180 degree. So what is the name of this? DOB, and this will be DOB and BOA. This will be BOA. So DOB and BOA, their sum is also 180 degree. So two pairs are what? Two pairs are supplementary angle. So I am drawing now. Now question number 13. Answer the following questions from the given figure. First, name a pair of vertical opposite angle. Here so many of vertical opposite angles are there here. 3 and 4 we can write, 1 and 2, 6 and 5. So out of these three pairs you write any one pair. Next, are angle 3 and 6 are vertical opposite angle? In this question asking 3 and 6. 3 and 6, no. 3 and 4 will be vertical opposite, means सामने सामने. So 3 and 6 are not vertical opposite angle. Next, name one linear pair. So linear pair here, how we can write? Name one, just a minute, name one linear pair. So linear pair here, total sum should be 180 degrees. So 3 plus 5 we will write. This angle and this angle will be linear pair. Means two angles is not possible here. Angle 3 plus angle 5, one angle, and angle 1. Like this type we will write, then only it is possible. So linear pair के लिए क्या करना पड़ेगा? दो एंगल और एक ये तीन, टोटल तीन एंगल मिला के हो रहा है लीनियर पेयर. लीनियर पेयर मतलब स्ट्रेट एंगल फॉर्म करेगा. तो वैसे इधर भी देखो. नाउ अनदर पेयर देखो. इफ आई टेक दिस स्ट्रेट एंगल, दिस वन, तो इसमें भी क्या होगा? दो ये लेना पड़ेगा, 1 + 3, एंगल 1 एंड एंगल 3 के साथ एंगल 6. एंगल 1 प्लस एंगल 3 के साथ एंगल 6. तो ऐसा एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ लीनियर पेयर के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट डी. आर एंगल 6 and 4 आर एडजेसेंट. 6 and 4 आर एडजेसेंट, अगल बगल है. तो यस, 6 and 4 आर एडजेसेंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 14, ट्रू एंड फॉल्स आर देयर. सो यू विल फिल इन द बुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. Here diagram are given and we have to find the value of x. So it is very easy. What is the total? Total it is straight angle. Linear pair भी है और straight angle भी है, दोनों है. तो x plus 40 how much? 180 degree. Total देखो from here to here 180 degree. तो 1 यदि 40 डिग्री है तो हाउ विल फाइंड द अनदर?
टोटल यदि 180 है तो 180 में 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140. So this angle will be x will be 140 degree and here region is linear pair angle. Now B question you see, this is the diagram x and 47 degree. तो asking what is the value of x. तो what is this angle, ये कितना डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है, ये टोटल 90 डिग्री है ना. तो आउट ऑफ 91 is 47. So other how we will find, by subtracting. तो that will be 43 डिग्री. तो ये आपका 43 डिग्री आ जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर सी तो डायरेक्ट इट इज़ गिवन वर्टिकल अपोजिट, ऐसे फॉर्म किया है ऐसे, एंड दिस इज एक्स एंड दिस साइड इट इज़ आस्किंग 110 डिग्री. तो ये तो डायरेक्ट वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, तो सीधा हम लोग लिख सकते हैं बिकॉज एक्स एंड 100 आर वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो डायरेक्ट आंसर होगा. सो टुडेज योर होमवर्क इज कंप्लीट वर्कशीट 2. पूरा आपको ये दिस वर्कशीट इज ओवर नाउ. और ब्रेन टीचर्स का मैक्सिमम जितना पॉसिबल है यू सॉल्व योर ओन बट नॉट इन फेयर कॉपी. अभी यू ट्राई अटेम्प्ट इन रफ कॉपी and tomorrow when I will explain this all questions I will explain, then you will note down in fair copy. So today worksheet 2 in fair copy and brain teachers now solve in rough notebook. Okay.